आज की क्लास में हम लोग डेटाबेस हैंडलिंग सीखेंगे. PHP comes with a database that is MySQL. For opening the control panel of MySQL, open the browser and type the address localhost with PHP myadmin. ये आपको MySQL का कंसोल खोल के दे देगा. यहाँ से we'll be learning how to create a database, then tables, how to put indexes and small attributes. First thing, we would like to create up a database, giving it name to myprac. Now, simple way to create up a table. Suppose I am taking a feedback and number of fields are required, suppose 6. First thing हम लोग रखना चाहेंगे ID, the name of the guest, his email address, contact number, his comments and date of comments. Data type make it integer, guest name के लिए variable character ठीक है, email के लिए भी ठीक है. Comments के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा text लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास text data type है, it allows 2000 characters. और एक इसमें लॉन्ग टेक्स्ट भी होता है. इसमें फिर अनलिमिटेड डेटा आप स्टोर कर सकते हैं. डेट एंड टाइम के लिए वील यूज़ डेट टाइम. इसमें डेट एंड टाइम दोनों यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप डेट यूज़ कर रहे हैं तो इन दैट केस ओनली डेट विल बी स्टोर्ड, टाइम विल नॉट बी स्टोर्ड. साइज मेक इट 50. कमेंट्स इस दोनों के मुझे साइज देने की जरूरत नहीं है, फिक्स लेंथ होती है. यहाँ से एक एट्रीब्यूट लगा सकते हैं आईडी के लिए, मेक इट अ प्राइमरी. और एक्स्ट्रा में वी विल मेक इट ऑटो इंक्रीमेंटेड. ऑटोमेटिकली 1 by 1 वो वैल्यू बढ़ता जाएगा. डिफॉल्ट कहाँ से देना है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. वेल, द स्ट्रक्चर हैज बीन प्रिपेयर्ड. अगला काम आता है हमारे पास एक कनेक्शन फाइल बनाना. और कनेक्शन फाइल से कनेक्टिविटी हम लोग यूज करेंगे. So simple, you can give any name. So we'll save our connection file to our web folder. Into a new folder that is database, just to keep our work separate, no other specific reason. The file name we are giving connection. Moving on to the code section, we will remove all the accessories from it. Things which are required to create up a connection is, first thing is the host name. If you're working on a local machine, it is localhost. Or if you're working on internet, some other remote server, in that case you will get an IP address. Next thing comes to be your database name. In our position, in our situation, we have got myprac. User. So user for the local machine is root, and there is no password. If you're working onto the net, you will get a suitable username and password. To get connection with MySQL server, command is mysql_connect. First parameter is the host name. Second one is your user. Third one is the password. इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं. Now to choose the database from the your MySQL server, command is mysql_select_db. यहाँ आपके database का नाम and connection ID. Well, these two lines create up the connection. Quite a simple thing.
नाउ एक फीडबैक फॉर्म हम लोगों को बनाना है. सबसे पहले एक फॉर्म इंसर्ट कर लिया. देन वी विल क्रिएट अप अ टेबल ऑफ एनी साइज, व्हाटएवर यू लाइक. All petty designing issues. Onto a feedback form, first thing we ask the name from our guest, his email address, contact number, and the comments which you like to post. A text box to hold up the value, giving its name to be guest name. We don't require a label tag. Actually, it puts up a label that is unwanted to us. I'm removing it. Now we have a button this way. So moving out of the code section, condition put कर देते हैं if you have pressed the submit button, it'll move to this section. एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग हमारे पोस्ट को. फॉर्म के जितने भी कंट्रोल्स होंगे उतने वेरिएबल्स बना लेंगे. एक एसक्यूएल डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने, टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए भी यूज इंसर्ट इनटू योर टेबल नेम, दैट वाज दिस. और कौन कौन से फील्ड्स थे वो स्पेसिफाई करें. guest name, email, contact number and the comments. और एक चीज date of comments. values जो हम लोग देने वाले हैं इसमें, बिल्कुल जो फील्ड के नेम है हमारे पास टेबल के, वैसे हम लोगों ने HTML controls रखे थे. That's why I'm simply copying and pasting up the data and prefixing the dollar symbol. डेट के लिए अगर आपको करंट डेट चाहिए तो यू कैन यूज curDate फंक्शन ऑफ MySQL, और आपको डेट और टाइम दोनों चाहिए तो यू कैन यूज नाउ. SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए वी यूज फंक्शन दैट इज MySQL_query. इसमें अपनी आप SQL क्वेरी पास कर दीजिए और यहाँ से आप यूजर को किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं. दैट इज thank.html, HTML, PHP, whatever. given HTML तो HTML ही रखेंगे हम. सिंपल मैसेज, and hyperlink. Suppose user is interested to give more comments. This way. तो सारी टेबल्स हम लोग सारी फाइल्स क्रिएट हो गई. नाउ विल ट्राई इट वेदर हाउ इट वर्क्स और नॉट. This is our folder, feedback.php, timing sub dummy data over here, submit. Now some problem with the query. Well, little bit mistake I had done
कि मैंने यहाँ पर कनेक्शन फाइल को इंक्लूड नहीं किया। कनेक्शन फाइल हमने बना तो दी, बट उसको यहाँ पर हमने इंपोर्ट नहीं करा। सो वी हैव टू रिक्वायर दैट लाइन, दैट इज योर connection file. This was the petty mistake. Okay, now we'll simply reload it. So thanks for your valuable comments. You check it whether these comments are saved over here or not. So it is giving the details that our comment has been saved. This is your proper date and time. Well, ये चीज़ तो हमने देखी MySQL पैनल के थ्रू। अब हम चाहते हैं कि एक जगह हो जहां से हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकें। उसके लिए वी आर क्रिएटिंग अप व्यू कमेंट्स। व्यू कमेंट्स में भी वो पहला काम हमारा यही रहेगा कि आपकी कनेक्शन फाइल को हम रिक्वायर करें। दिस वे एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, जिससे थ्रू डेटा हम लोग डिस्प्ले करेंगे। Make a 7 columns, 700 suppose. Make the alignment center. First thing you need ID, then the guest name, his email, so on. And an action column, and last one I mistaken, यहाँ एक नया column डाल लेते हैं। That is split 2 columns. Here I need the date. Well, the structure is ready. और इस रो में repeatedly हम लोगों को डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। Now एक SQL वेरिएबल लिया हमने, क्वेरी को एग्जीक्यूट करा एंड स्टोरिंग टू सम वेरिएबल। दिस वे तो a grid of rows and column is stored to your result variable। और अब इसको हम एक लूप के थ्रू रिट्रीव कर लेते हैं, दैट इज mysql underscore fetch underscore array। इसमें हमारे रिसोर्स आईडी रिजल्ट को पास कर दीजिए। तो ये लूप क्या करेगा, 1 by 1 आपका डेटा उठा के रो में स्टोर कर देगा एंड रो बिकम्स एन एरे। नाउ टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द रो वी कैन यूज दिस वे। 0th कॉलम का डेटा चाहिए हम लोग को, यू कैन राइट 0, यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द आईडी। Both the things could be done, but I personally prefer कि you should give the name instead of number, क्योंकि नाम से हमें किस चीज़ को recognize करना आसान रहता है। अब DOC ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। So it is better to write the proper name instead, proper field name instead of the column number। सभी चीज़ों के लिए हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। Well, the last column will be for action. इसमें 2 एक्शन हम लोग रखना चाहेंगे, एक तो एडिट के लिए एंड सेकंड वन फॉर द डिलीट। ट्रिक वही यूज करेंगे जो प्रीवियस केस में हम यूज करते थे, यूआरएल के साथ कुछ वैल्यू भेजेंगे। एक प्रपोज फाइल हम बना लेते हैं, दैट इज delete.php, और उसके अंदर वी विल पास द आईडी एंड सच अ वे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग इस डिलीट लिंक पे क्लिक करेंगे तो it will be sending the value ID of that particular row.
ऐसा ही कुछ हम लोग हमारे एडिट के लिंक के साथ करेंगे। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। Two different file there. Well, first we'll check where is our data, our lookalike. Our file is view comments that is showing us. जैसे एडिट पे क्लिक करूंगा आप नीचे अपनी स्टेटस बार में देख सकते हैं, it is showing that will move to edit.php and id will be 1. delete.php भी में ऐसा ही है। अब we'll be creating of the delete.php. Data is coming from the address bar, so we'll get it like this. क्योंकि हम लोगों के पास जो भी वैल्यू आ रही है that is coming, well, that is coming through this id field. तो जो भी हम लोगों को रिट्रीव करना है we could retrieve using the URL technique that is $_get. Now we'll be creating up an SQL. Simple SQL. Now we'll execute the query. Now from here we'll again redirect to the user from where he has came from. This way we'll require the file again, our connection file. Without this we can't perform any MySQL commands. Simple thing. I will try it. As soon as I click on delete, it went over there, deleted the data, again came over here. So right now there are none record exist. If I again click on show, it will show 0 records fetch out. Result is an empty result. Well, next thing comes to be edit. Onto the edit, I need an interface that whatever values given from the user, it should be shown in a form. When the user submits up the form, it should be updated. For that part, again we will create up a form, a table. Same technique we have to use again. जो तरीका हम लोगों ने डेटा लेते समय लिया था यूजर से फीड कराते समय, उसी तरह से एडिट हम लोग कराएंगे। Sorry, this time we are giving its name to be update. आप लेबल भी यहाँ पर उसका चेंज कर लीजिए। Now it has our edit. Now move to the coding section of the edit. सबसे पहले हम रिक्वायर कर लेते हैं फाइल को। कनेक्शन फाइल रिक्वायर हो गई। यहाँ से हमने आईडी रिट्रीव करी जो हम लोग के पास एड्रेस बार से आ रही है। क्वेरी को एग्जीक्यूट करा, सॉरी पहले क्वेरी बना लेते हैं। दिस वे
उन सभी रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए जहां आईडी मैच करती होगी. नाउ एग्जीक्यूट द क्वेरी. उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, दैट इज रिजल्ट. देन इसका आउटपुट ले लेते हैं हम लोग फैच करके. एक ही रिकॉर्ड आएगा हम लोग के पास क्योंकि आईडी हम लोगों की यूनिक है. तो सारा डेटा हमारे पास उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का रो वेरिएबल के अंदर आ चुका है. अब इसको शो करने के लिए वी विल बी यूजिंग $रो. guest name, same technique for the email. टेक्स्ट एरिया में वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता हमारे पास. We have to put entire thing in between the starting and closing tag of the text area. And one we will be creating up a hidden variable. Value of this hidden variable will be the row आईडी. ये चीज हम लोगों को इसलिए जरूरत है क्योंकि अपडेट करते समय हमारा सिंटेक्स होगा अपडेट टेबल नेम सेट फील्ड नेम इक्वल टू दिस वेयर आईडी इक्वल टू दिस. तो जो भी हमारी आईडी होगी वो हमें रिट्रीव करके यहां लिखनी है. हिडन इसलिए बनाया ताकि स्क्रीन पे हम लोग को विजुअलाइज ना हो. नाउ फर्स्ट वी विल चेक आउट द थिंग. वी विल feed one more record to it, then only the work will process. So this is our feedback.php, some dummy comment, 3-4 comments we'll write on. Well, now we'll move to the view comments. Now when you click onto this edit, it is showing us the records. Now इसके फॉर्म को थोड़ा देखते हैं हम लोग सोर्स में जाके. Here you can see the form contains the guest name, email, comments, contact number, comments and the ID number 2. ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना अपडेट नहीं होगा. Now we will put up if condition अपडेट के लिए कि पोस्ट में अगर अपडेट हम लोगों का सेट है तब हमारी अपडेट क्वेरी चलेगी. पोस्ट को हमने एक्सट्रैक्ट किया. SQL query update your table name, then your field name, आईडी को मैं सिंगल इन्वर्ट कॉमास में इसलिए नहीं इनक्लोज कर रहा क्योंकि इट्स अ न्यूमेरिक वन. क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं. Now after executing I am sending the user to again
to the page which you originally came from. This way. Now update, we are moving to edit, writing some suitable data. This way your record has been updated. So we did insert, delete, edit and update. That's all.